Now we move to the next method for finding the initial feasible solution to a transportation problem, and the name of this method is Vogel's approximation method. In transportation, this method is actually considered as the best among all the methods which are provided for finding the initial feasible solution. And the reason behind that is that the value we find by using Vogel's approximation method of the transportation cost is the most minimum value comparing to the other methods. तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की मदद से निकालते हैं, वो कॉस्ट अगर हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से या जितने भी इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मेथड्स हमारे पास हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप एक डिफरेंस हर एक मेथड की कॉस्ट में फाइंड करेंगे. और सबसे बेस्ट मेथड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे मेथड्स के कंपैरिजन में हमें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट मिलती है वो हमें वैम ही देता है. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वैम. सो लेट्स बिगिन द वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसे हमने पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड से इवेलुएट किया था. अभी हम इसे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इवेलुएट करेंगे. तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दोनों मेथड से आने वाली कॉस्ट का डिफरेंस क्या आता है और किस तरीके से आता है. सो लेट्स बिगिन using this. As usual, the first step of solving every transportation problem is to check that whether the transportation problem is balanced or not. So when we check, we already shown that the total supply is equals to total demand. तो supply और demand दोनों equal हैं. That means ये transportation problem क्या हुई? Balanced transportation problem. As we find that the transportation problem is balanced, then we move to the next step, that is second step. And in this step we have to find out penalties on both sides. Both sides means we have to find the penalties for both all the rows as well as all the columns and reduce this matrix in the same manner. The method we used, you can understand it better as I have started solving it. So we will start from the first row to find the penalties. The method we use to calculate the penalties is that we just need to find the most minimum value in the particular row. तो जैसे कि हमने फर्स्ट रो को ले लिया है और फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 2 एंड द जस्ट नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू इज़ 4. तो सबसे छोटी वैल्यू 2, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू 4 या फिर नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 4. नाउ वी विल डिडक्ट और वी विल फाइंड द डिफरेंस of these two values and we get the difference as 2. 4 minus 2, 2. We will not consider any sign here, we just need to find out the difference between the two values. So we will get the value 2. In the same manner, in the second row you will get the value 2 again. In the third row we have the values 4 and 5. The most minimum 4 and the next minimum value 5. So 5 and 4, 1. The difference is 1. In the fourth row, we also have 1. Now we will move to the columns. Now we find the penalties for the columns. For this column, the minimum value is, most minimum value is 1 and the next minimum value is 2. और दोनों का difference क्या होगा? Difference is 1. ऐसे ही second column में the most minimum value 3 और उससे just next minimum value 4. Again the difference is 1. In the third column, again we found the difference is 1. That is the difference between 1 and 2. Okay. Now as we have calculated all the penalties on both the sides, now we will move to the further process, and that is among all the penalties, just find out the maximum penalty, which is the maximum penalty here. So as we can see that हमारे पास दो वैल्यूज़ सेम है और सबसे मैक्सिमम है. अगर हम कंपैरिजन करें सारे पेनल्टीज़ में तो हमारे पास 2 और 2 दोनों ही क्या है, मोस्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू है. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि विच वैल्यू वी हैव टू चूज़. यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये भी है और मैक्सिमम वैल्यू ये भी है, यानी कि यहाँ पर टाई हो गया. तो अब इस टाई को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो इसके लिए
मिनिमम कॉस्ट कितनी है, इसके लिए मिनिमम कॉस्ट है 2, और अगर हम इस वैल्यू को चूज़ करते हैं एज अ मैक्सिमम पेनल्टी तो इसके लिए मिनिमम कॉस्ट है 1। और जब यहाँ टाई हो जाती है यानी कि पेनल्टीज़ में टाई हो जाती है तो फिर हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जो मिनिमम कॉस्ट होगी फिर हम उसी की मैक्सिमम पेनल्टी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मिनिमम कॉस्ट है वो किसके लिए है, इस मैक्सिमम पेनल्टी के लिए। दोनों कॉस्ट के कंपैरिजन में ये वाली कॉस्ट कम है, राइट। For this maximum penalty we have this row to choose, because on comparing 2 and 1 we will find 1 as the minimum cost. जिस भी पेनल्टी को हम मैक्सिमम पेनल्टी मानते हैं हम उसको एक एरो साइन से डिनोट कर देते हैं, और इस एरो साइन का मतलब होता है कि अब आपको इस पर्टिकुलर सेल, इस पर्टिकुलर रो में काम करना है, और इस पर्टिकुलर रो में जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू है उसको आपको लेना है। तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 1। हम इस 1 से स्टार्ट करेंगे और इस 1 के लिए सप्लाई और डिमांड चेक करेंगे। एंड ऑन कंपेयरिंग द सप्लाई एंड डिमांड फॉर दिस वैल्यू वी विल फाउंड 8 इज़ द मैक्सिमम एलोकेशन वी कैन गिव टू दिस कॉस्ट। सो वी विल एलोकेट 8 here and deduct the same value from both the sides. In Vogel's approximation method, when any row or any column left with zero supply or zero demand, we remove that particular row or column from the matrix. So we will move to the further step by removing this particular row from this matrix. On removing that particular row which was having zero supply, we will left with this matrix. After removing the row with zero supply, we reduce the matrix to this form, and again we will repeat the procedure and calculate the value of penalties. So for the first row we will find the penalty 2, as 2 is the most minimum value and the next minimum value is 4, and the difference between these two values is 2. For the second row we have 1, and the third row we also have 1 as the penalty. For the columns 2 and 1, so therefore we have again 1 as the penalty, and in here 4 and 6, so the difference is 2 as a penalty. 4 and 2, again the difference is 2 as a penalty. Now we are left with maximum penalties which are 3 in numbers and are similar. So there is a tie. Now we have to understand that which one we have to choose. और ये डिसीजन लेने के लिए आपको देखना होगा कि इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इन तीनों वैल्यूज़ के लिए सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। सो अगर हम इस रो से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस रो टेकिंग दिस एज द मैक्सिमम पेनल्टी, तो इसके लिए हमें मिनिमम कॉस्ट मिलती है 2। And if we start from this value as taking as maximum penalty, then for this we have 4 as the minimum cost. Now we move to this one. Here also we have 2 as the minimum cost. So we can choose either this or this. इन दोनों में से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं एज अ मैक्सिमम पेनल्टी। तो मान लीजिए अगर हम चूज़ कर लेते हैं इस कॉलम को, हमने इसको मैक्सिमम पेनल्टी चूज़ कर लिया, और अब हम इस मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को वैल्यू एलोकेट करते हैं। तो इस वैल्यू के लिए सप्लाई हमारे पास है 14 और डिमांड हमारे पास है 10। सो वी हैव टू गिव मैक्सिमम एलोकेशन टू दिस सेल। सो व्हाट विल बी द एलोकेशन, 10। सो वी विल एलोकेट 10 here and deduct the same value from both sides. So here we left with 0, and here we left with 14 minus 10, 4. Right? Now, as in the last table, we have removed the row with 0 supply. So here we are left with 0 demand. So we will remove this column. That means W3. This whole column will be removed in the next table. Now we get the reduced matrix after removing the column W3, and now in this reduced matrix we have removed W3 column. We will start calculating penalties
row wise and column wise. So start from the first row. 2 and 7, that means 5 as a penalty. 5, 4, 1 as a penalty, 5 as a penalty. Again in the column we will get 1 as a penalty, 2 and 1 difference, 4 and 6, 2 as a penalty. So you can see that we have found 5 as the maximum penalty, but again there is a tie. We are having 5 at 2 places, for the first row and for the third row also. तो अब हमारे पास for this value 5, you will find that 2 is the minimum cost, and for this 5 we have minimum cost 2, and for this 5 we have minimum cost 1. So we will choose this value as the maximum penalty, and we will allocate the value from supply and demand here. On comparing supply and demand, we will find that we have to allocate 4 here and deduct the same value from both the sides. We will get 0 here, and 7 minus 4, 3 here. Now again we are left with a row which is having 0 supply. So in the next table, in the reduced table, we have to remove this particular row, that is F3, and form a new table. Again we will find the penalties in the reduced table where we have removed F3 row. So we are left with this table, and now again we have to calculate the penalties. For this row we will get 5 as the penalty, for this row we will get 1 as a penalty, and for this column we will get. Now for the columns we will get 3 as a penalty here, and again 3 as a penalty here also. Now move to the next step. The maximum penalty, we can see that 5 is our maximum penalty. 5 अगर हमारी maximum penalty है, then we have to choose this row, and the minimum cost here is 2. तो अगर हमारे पास 2 minimum cost है, that means now we have to allocate the supply and demand to this cell. So here we will allocate 5 or 3, 3, right, and deduct the same value from both sides, 0, 5 minus 3, 2. Now there is no need to make other table, any further reduced form. We have to sum up this procedure or this method within this table only. So now we have to hide that row or column which is left with 0 value. So we are left 0 demand for W1. So we will hide this one, and we will work on this column. So for this column you can see the maximum penalty on comparison is 5 or 3, 1. On comparison we will find 5 as the maximum penalty again, but we have already taken 5 as the maximum penalty and given the allocation. So we will move to the next one. So we will choose 3 as the next maximum penalty, and for 3 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी 4 एज अ मिनिमम वैल्यू, या मिनिमम कॉस्ट इसके लिए क्या होगी, इस कॉलम के लिए 4. तो हम इस मैक्सिमम पेनल्टी के लिए इस 4 को एलोकेशन देंगे. 9 और 7 के कंपैरिजन में 7, हमने मैक्सिमम एलोकेशन उसको 7 दे दिया, और 7 को यहाँ से भी लेस कर दिया और यहाँ से भी लेस कर दिया. तो हमारे पास वैल्यू बची 2. अब हमारे पास सप्लाई भी 2 है और डिमांड भी 2 है. किसके लिए? W2 वेयर हाउस के लिए. तो अब हमें क्या करना होगा, इस एलोकेशन को आपको इसको एलोकेट करना पड़ेगा. इस सप्लाई और डिमांड को हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा. तो हमने इन दोनों को यहाँ एडजस्ट कर दिया और हमारी एलोकेशंस फिनिश हो गई. नाउ वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन or the problem which we were solving, and start allocating all the allocations to the respective cost. In the second step we get 8 as an allocation for this cost, so we allocate 8 as a value here. In the next table we get 10 as an allocation at this cell. In the third or the next table we get allocation 4 here, and in the last table we get allocations 1 at the 7, that is 2, 1 at 4, that is 7, and 1
at 2, that is 3. Now we will check whether the solution obtained is feasible or not, or whether the degeneracy problem exists or not. So let's start counting the number of allocations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are having 6 as a number of allocations. That means the number of allocations are 6. Now to check that whether the solution obtained is feasible or the degeneracy exists or not, we have to find the summation of m plus n minus 1. We have to solve it, where m means number of rows and n means number of columns. And on solving it, the value we obtain should be equal to number of allocations, and only then we can say that the solution obtained is feasible or the degeneracy problem does not exist. Here we have m, that is number of rows 4, and the number of columns 3, that is n. So on solving this equation, you will get 6, and it is showing that the number of allocations is equals to this value. So we are confirmed now that the solution obtained is feasible and there is no problem of degeneracy. And lastly, we will calculate the transportation cost by multiplying the allocations with the cost given. So the total transportation cost obtained by multiplying the allocations is rupees 80. That is our answer.